Assalamu alaikum students, I am Zanfar, your chemistry tutor, and welcome to MDCAT Chemistry Crash Course. And today we are going to discuss some MCQs of stereochemistry. And our first question is, which pair of organic compounds show position isomerism? So what is position isomerism? It is a type of isomerism in which compounds having same molecular formula but different position of the same functional group. Such isomers are called position isomers. So alpha is CH3 single bond, CH2 single bond. It is propanol, that is a C3H6O, and the second one is a ketone, that is a propanone, C3H6O. So they have same molecular formula but and different functional groups. So such compounds that having same molecular formula but different functional groups are called functional group isomers. So alpha is functional group isomers. These are functional group isomers. यहाँ पे aldehyde group present है, यहाँ पे ketone group present है, so they are functional group isomers. And the beta is the molecular formula of first one is C3H8O, and the second one is C3H8O. Such compounds that having same molecular formula but different position of the same functional group. यहाँ भी hydroxyl group है, यहाँ भी hydroxyl group है. यहाँ पे they have one propanol, this is two propanol. It means that they are position isomers of each other. So beta 1 is they are position isomers of each other. Charlie is CH, this is diethyl ether, this is methyl and propyl ether. So they are position isomers as well as metamers. बट जब आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हो, आज कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए जिसके अंदर हमारे पास दोनों पोजीशन आइसोमरिज्म भी शो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे हम उस वक्त, हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे. देखिए दे आर आल्सो मेटामर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज मेटामर्स आर सच कंपाउंड्स दैट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. यहाँ पे कितने कार्बन है? 2, यहाँ पे है 2, तो फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड पे है 2 कार्बन एटम. यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 3. इट मींस दैट दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर. सो द प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसको असाइन करेंगे. अब प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? टाटामर्स को प्रेफर करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स पे, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करते हैं मेटामर्स पे, मेटामर्स को प्रेफर करते हैं चेन आइसोमर्स पे, चेन आइसोमर्स को प्रेफर करते हैं पोजीशन आइसोमर्स पे. तो मेटामर्स को हम प्रेफर करते हैं पोजीशन आइसोमर्स पे. दैट्स व्हाई द चार्लीज आर मेटामर्स, दीज टू आइसोमर्स आर मेटामर्स. एंड द डेल्टा इज CH3 सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे देखें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिल, और यहाँ पे है एस्टर. सच कंपाउंड्स दैट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. अब यहाँ पे देखें इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C2H4O2. दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. इट मींस दैट डेल्टा इज आल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. फर्स्ट वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, सेकंड आर पोजिशनल आइसोमर, चार्ली इज metamers, and delta is functional group isomer. So our beta is the right answer. This pair of organic compounds of positional isomerism. All of the amino acids are optically active except one. So glycine is optically inactive while all the amino acids are optically active. Why glycine is optically inactive? This is the structure of glycine. This is not a chiral carbon. For optically active compounds we require a chiral center, optically active center, chiral carbon or optically active carbon, the carbon with which 4 different groups attach. अब यहाँ पे देखें 2 similar group attach है. That's why this is not a chiral carbon, this is a prochiral carbon. This is a prochiral carbon, and the prochiral carbon is that carbon which is converted into a chiral carbon after a single transformation. हाइड्रोजन को किसी टेस्ट ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देते हैं, then we get a chiral carbon. So that's why this is called prochiral carbon and this is called a chiral carbon. This is called prochiral carbon. So our alpha is the right answer. Alanine and valine, they are optically active because they are directly bonded with 4 different groups. This is a structure of valine, that is our Charlie, and this is a beta. Hydrogen
अमाइन ग्रुप, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगाएं, CO2H, यहाँ पे आप कार्बोक्सिल ग्रुप लगा लें, दिस इज आवर चार्ली एंड देयर इज अ मिथाइल ग्रुप here. This is called alanine. Alanine is optically active because it consists of a chiral carbon. This carbon is chiral carbon because 4 different groups attached with this carbon. That's why this is a chiral carbon. While this one, this is also a chiral carbon. Valine can also contain the optically active carbon or a chiral carbon because 4 different groups attached with this. 4 different groups attached with this carbon. This carbon is optically active carbon, chiral carbon. That's why it have the ability to rotate the plane polarized light. That's why all the amino acids are optically active except the glycine. Our alpha is the right answer.